और वीडियो ऑफ कर लेते हैं। वानी स्टार्टिंग सून वाला कर दो। Okay. Hi guys, thank you so much for the patience and really appreciate this. जो भी लोग अभी रुके रहे, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। वानी, we are live. How are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good. गाइस अभी भी लैग आ रहा है क्या? प्लीज बताना। अब नहीं आना चाहिए लैग, है ना? अब लैग नहीं, अब फील आनी चाहिए। सो वानी इतने कंफ्यूज क्यों? रिलैक्स, इट्स ओके, Right. पीपल विल कम अगेन, लाइफ है। Yeah. Just I'm going to post this. हम बस पोस्टिंग कर रहे हैं साथ साथ। या Like, प्रेजेंस, यस, सब अटेंडेंस लगा दो गाइस। या ये हुई ना बात, अब सही ऑडियो। नाइस, अब फील आएगी गाइस। अरे आज बड़ी बातें करनी है, क्या बात कर रहे आज हो? नो कैंसिल लैग। करना है. जय जब तारीफ करते हैं अच्छा लगता है यार, क्योंकि जय ने कुछ अच्छा लगा। अब सही है, नो लैग। बस गाइस नजर नहीं लगानी, अब काम करते हैं, अब बातें करते हैं। ठीक है। व्हाट्सअप वानी, हाउ आर यू? I'm great. How are you? I'm great. Welcome to the second innings. And Yeah. Nikhil is saying bonfire start karo. Yes. And We should तो have यार one. आज, Sorry. हाँ, नहीं नहीं, bonfire चालू करनी है। Yeah, we should have a session around that and we should stream. बस उसमें ऑडियो का देखना पड़ेगा कैसे करना है, but such a nice या idea. या आगते हुए बाहर बर्फ पड़ रही है. या नहीं नहीं, बिल्कुल लाइक ग्रेट है ये। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन गाइस। अविनीश इज हियर, अर्नब इज हियर, निखिल, हमारे गॉडफादर्स आ जाते हैं। सो आज मैंने डाला था मेरे इंस्टा पे कि टुडे स्ट्रीम विल गेट मी कैंसल्ड, एंड Piyush sent me this beautiful DM कि whatever happens, wherever your tribe will stand with you, you won't get cancelled। मेरे हाँ. को एक दो लोगों ने और ऐसे मैसेज किया कि तुम कैंसिल नहीं हो गए, ऐसे चिंता मत करो। You never answered the questions that people sent you in the Q&A you tried to do. I mean, I don't या know. Was तो it like just for fun, or wait, are you actually going to pick up the questions? आज वाला मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि वैसे वन अच्छा. लास्ट टाइम। I was like, ठीक है, ये scam है. Yeah. So, Yule log streams, please make it happen. My admiration and you feeling good, sir, is a win-win situation. जय भाई, रुलाओगे क्या? बस यार ऐसे मत करो। सही है। चलचित्र प्लेलिस्ट लीडेड। तो अब धीरे धीरे फ्लो बनेगा। एंड आई हैव वाटर विद मी, वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। हाउ इज द वेदर इन चंडीगढ़, वानी? It's not. Bangalore's weather is nice, sir. I was तो very बारिश भी, तो irritated. बारिश तो यहाँ भी हो रही है, बारिश बैंगलोर में भी हो रही है। व्हाट्स द डिफरेंस? But like the garmi is still here. Like I was हाँ, sweating profusely. प्रोफ्यूजली, ऐसा यूज करना है वर्ड मेरे को कभी कभी ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में। बात ही तो कर रहे थे हम। प्रोफ्यूजली। But yeah, no, Chandigarh is nice. It was really, it was a great, like, so मेरे घर में दिक्कत ये है कि जैसे ही मौसम खराब होता है, लाइट चली जाती है. मेरा अलग स्ट्रगल शुरू हो जाता है वहां पे. हाँ, So I have to decide, do I need barish or do I need electricity in life? या मैन, या Or should I just push my landlord for a I was going to say ventilator in wood. I'm sorry. या Yeah. डू यू थिंक लाइक द मोटिवेशनल स्पीकर्स विल वॉच दिस वीडियो टुडे, और आर दे ऑलरेडी वाचिंग? They already are. You फॉलो never. तो सब करते ही हैं हमें। पता किसी को चलता नहीं है ना, so they already are. कौन सा किसी को पता चल रहा है, गेस करते रहो कौन कौन सा देख किसी को रहा है. पता चल रहा है? या मेरे को यार एक ऐसी बात शेयर करनी थी कि ये जो आज का जो डिस्कशन है, लाइक मतलब इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम फियर, लाइक नॉट जस्ट कि अरे कि देश में क्या होगा, लाइक व्हाट दे डू एंड स्टफ। लाइक मेरे को एज अ बड़ा सेल्फिश सा फियर है मेरा, तो लाइक द फियर आई हैव फॉर माई सेल्फ एज अ क्रिएटर, और एज समवन who is also someone like one of the people who is involved in the
द फाउंडिंग टीम, अब मेरे को उसमें चिंता ये होती है कि जब आपके अराउंड सब शोर कर रहे होते हैं ना, याद है क्लास में Is लेके, it my internet? और इज इट जस्ट रनिंग? हाँ। ऐसे मत बोलो यार. या Is it my अब internet? आपका इंटरनेट, या इट्स But like योर्स। मुझे अभी तक नहीं आया कि इंटरनेट इज अनस्टेबल. ओके, मे बी अब आ जाएगा. या. ओह It's not my internet. यस, इट्स, आई थिंक इट्स माय इंटरनेट। या Nice. सॉरी गाइस। या तो मैं आपको बता रहा था कि आई चलिए. डोंट नो, या. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ द पीपल अराउंड अस, हर जगह इतना शोर है तो हमें भी लगता है कि शुड वी बी लाउड, लाइक वो एक बहुत ही ज्यादा, या या. एक, Okay. I think it was your internet. But no, I genuinely don't think we should be loud. It's honestly, I believe it's a waste of energy, and I'm not, मेरी already इतनी ज़्यादा energy नहीं है, so I'm like already very careful with how I spend my energy, and I just think उसमें बहुत energy चाहिए. या या You're bothered by the internet, right? या हे I listen, Vaibhav. I listen. Nobody got the joke. Okay, sorry. ये मेरे साथ बहुत होता है. In fact, I had a dream जहाँ पर like you used to have those speech elocution contests जब आपको extempore of sorts, extempore, whatever it is. तो I had a dream and my word was blabber, and I'm making some really nice jokes and nobody is laughing. And I woke up with trauma. And like the entire day, I was so afraid to crack jokes. And रात को मैंने हिंडोल के साथ stream किया and he also didn't laugh. And I was like, please be kind. what's the takeaway from this? Like, it's okay, crack jokes and laugh yourself. Got it. मेरे को तो यार काफी ज्यादा, लाइक इट्स वन थिंग आई हैव बीन लाइक थिंकिंग अ लॉट अबाउट बिकॉज ऑफ हाउ लाउड एवरीवन इज। जैसे मेरे को लगता है कि अगर एक न्यूज चैनल लाउड है, मान लो कि 4 साल पहले 5 साल पहले एक ही न्यूज चैनल लाउड होता था, रिमेम्बर लाइक द अर्नब गोस्वामी के जो इनिशियल डेज थे व्हेन Yeah. ओनली ही वाज लाउड, एंड देन एवरीवन Hmm. रियलाइज कि हम सबको लाउड होना पड़ेगा, एंड Yeah. Okay. and yeah, so let me also try changing my internet one, like Okay. Let's आप do लीड ले that. सकते हो। Yeah. Until then, guys, Yeah. do like the stream. 85 people are watching, and I only see 25 likes. I say, I mean, maybe. Yeah. It's not my internet. It's actually genuinely 23 likes. Because 83 people are watching. At least get it to like 50 likes. It'll be so nice and lovely. Crack jokes, lol yourself. Good one. I know. It's like so I will tell about the dream in detail now. So I got the word blabber, and I'm genuinely, they were not nice jokes, but they were like self-deprecating humor. And I genuinely thought that people can laugh when people are like trying to be funny and awkward because they are being funny. 42 people like the stream. Nice, guys, 2 more likes. But yeah, it just made me very conscious for the following day. And hey, Narendra is joined. Hey, Narendra, how are you? I'm yet to share the playlist, but I hope you're doing well. Saurav is also here. Yeah, I am also Vaibhav here. is also Hello, hello, hello. wow, what a sync in the joke. Nice. Yeah. So क्या बता रहे थे वानी, मेरे को भी बताओ, because of the internet, like I missed a few things. Yeah. Oh, I was just asking them to like the stream because 90 people are watching and only 50 likes are there. Got it. And then I was telling them about my dream and how embarrassed I was for the next day. I don't know, suddenly, maybe it's because I've been tired a little, like I've been a little tired when I go to sleep. So the dreams that I have are very realistic. Like I have to tell myself in the morning that that was just a dream that did not actually happen.
Because एक तो वो बहुत realistic से हो रहे, it's not like some sci-fi thing is happening or some fantasy thing is happening. Like I wake up and I genuinely have to tell myself like, oh, was that real? No, that was just a dream, because कल तो ऐसा नहीं हुआ. Like, you know what I mean? Yeah, yeah, yeah. That's it. Somebody has written, Nikhil has written interpretation of dreams with Vaani Mahesh. Yeah, I wanted to read that book, but I've heard a lot of things. So I'm like, but yeah, Interpretation of Dreams is a book. yeah, it was written by Sigmund Freud. I don't know how to pronounce his name. Freud. मैं तो Yeah, Freud बोला था. the teacher of Carl Jung. हाँ, yeah. But मुझे उसका नाम pronounce करना आता है, so I'm going to say that. मैंने बहुत जंग किया है भाई, बहुत जंग किया, बहुत मजाक ये उड़ाया मेरा. बहुत जंग लड़ी है. हाँ, जंग के साथ काफी जंगें लड़ी हैं हमने. Yeah, Yeah. but yeah. But no, But it was actually very strange. But blabber was a word, and nobody laughed at my jokes. Maybe I was not loud enough. Yeah, but like, yeah, let me tell you the problem I have with like every person out there who is a motivational speaker in general. I think most of these people are extremely bad listeners. एंड आज की डेट में आप और मैं इतने एपिसोड्स करते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं, तो काइंड ऑफ इट्स वेरी इजी टू टेल कि अगर सामने वाला बात सुन रहा है या नहीं. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि यार कि हमारे पास कोई एक ऐसे सिक्स सेंस है, ठीक है, like we can tell at places where the other person can't, but in general also these people are really bad listeners. So when you are a bad listener you eventually become full of yourself, right? And वो जो psychophants होते हैं, you जो eventually होता है ना कि when you get successful you surround yourself with those kind of people. बट चलो अगर आप वो वाली लेयर हटा भी दो एंड यू जस्ट टॉक अबाउट द आइडिया दैट लाइक ओके, इफ समवन इज सेइंग कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, कल्ट्स जब बनते हैं किसी इंसान के, तो और यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा, जिनको लग रहा है कि हम सेफ है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम. I am so sorry, I'm cutting you off. Is it just motivational speakers? I sometimes have this problem with, in general, our generation and influencers as well. No, And no, not no. just the motivational I speakers. am kind of trying to grill down those motivational Okay. speakers right now. ये प्रॉब्लम जो है मतलब, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स ये चीजें प्रीच करते हैं ना, बट लाइक व्हेन दे आर नॉट लाइक incorporating the things that they are preaching, right? Right. And इसको मैं बोलता हूँ मोनोलॉग टू मोनोलॉग जीना, कि आपने एक मोनोलॉग दिया, फिर आप अलग अलग जगह जा रहे हो. आपने अरे आज वानी के साथ चलचित्र टॉक्स पे गेस्ट एपिसोड है, तो वहां पे मेरे को मोनोलॉग देना है. सो Right. यू आर लिविंग टेड टॉक टू टेड टॉक. आपको लगता है हर चीज टेड टॉक है, आपको घर पे खाना खाना है तो आपको टेड टॉक लगती है, यू थिंक Right. एवरीथिंग इज अ टेड टॉक. एंड इट रियली रियली और इसमें ना मतलब जो भी एक्सट्रीम्स है, चाहे आप किसी भी जो मतलब किसी भी ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, लाइक जो मतलब ऐसा अर्बन ऑडियंस या मतलब हर जने के लिए बना रहे हैं, एवरी फकिंग पर्सन इज प्रॉब्लमैटिक इन दिस. इट्स नॉट इवन फनी हाउ बैड इट इज. और ये लोग फिर बैड लिसनर्स होते हैं. एंड आई एम गेटिंग कॉन्शियस बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हम सेम कम्युनिटी का पार्ट है. इट्स लाइक कि क्लास में हम इन्हीं के साथ बैठे हैं, राइट? एंड लाइक दीज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, और Yeah. उसकी वजह से काइंड ऑफ हमें भी पनिशमेंट मिल रही है, बिकॉज हम सारे सेम उसका पार्ट है. एंड इट्स जस्ट अ गेम दैट is something जो हम हमेशा ट्राई करते हैं not to get involved in these things, but like we Absolutely. kind of are getting involved in this thing, and it like really pisses me off, because I eventually don't want Chalchitra to become a loud news channel where we are just like, ये मेरा क्या कार्तिक आर्यन प्यार का पंचनामा वाला रैंट हो रहा है क्या? नहीं हाँ, नहीं. बट लाइक अभी वो एक वर्ड बोलता है ना कि लाइक जिससे उसका व्हाट्स द वर्ड कार्तिक आर्यन सेज, मैं पूरा एक रैंट बनाता हूँ. गाइस क्या बोलता है कार्तिक आर्यन लाइक जब वो रैंट करता है, वो स्टार्टिंग में उसको एक ट्रिगर वर्ड मिलता है और उससे वो पूरा का पूरा Problem. प्रॉब्लम. ओ यस यस प्रॉब्लम. सो हाँ, आई हैव अ लॉट ऑफ. Even I have a rant उसके बाद. मेरा वाला बहुत छोटा सा sweet rant है, but like हाँ, it's a rant for me. नहीं मेरा वाला लाइक इट्स अ वेरी अग्रेसिव रैंट एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दिस. One. वन. Action. प्रॉब्लम. Should I do that again?
Okay, you're getting in the group. Sorry. मेरे को पता है उन लोगों से सही में बहुत ज्यादा दिक्कत है जिनको लगता है दे आर गुड लिसनर्स एंड दे आर नॉट एंड like it's a very big problem in the world today, and especially in the interviewing zone or in the zone where you have a podcast, or बहुत लोगों को लगता है they are good listeners, or anyone who thinks but like they are not good listeners, again they are living monologue to monologue. मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है इस चीज की, and I am not even saying कि I am a great listener, let me also say that, बट लाइक मैं ऐसा कुछ प्रीच भी नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से सीखो ये वाली चीज जो है. बट इवेंचुअली द कल्ट्स दैट आर गेटिंग मेड, लाइक किसी भी आप लाइक इंडिविजुअल को उठा लो, सबके अलग अलग कल्ट्स को भी आप उठा लो, दे आर लाइक वेरी प्रॉब्लमैटिक. एंड अगर आप लोगों को लगता है नहीं बस एक ही की ऑडियंस टॉक्सिक है, सबकी ऑडियंस टॉक्सिक है. एंड and we are very very close to, like in close proximity to these people, and that is why मेरे को बहुत डर लगता है. क्योंकि अगर हर इंसान मान लो 10 जनों के ग्रुप में बस वेट कर रहा है मैं मेरी बात कब करूंगा, 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 मतलब देन एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे इवॉल्व करोगे. एंड लाइक बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा. एंड इट्स जस्ट सैड, it's the opposite of everything that we are trying to do, and not that we are doing that, but कहीं ना कहीं यार उसका रिपल इफेक्ट तो आता ही है ना. Absolutely. याद है जब लाइक वी वर डूइंग, लाइक जब नेवल हमारी चैनल पे पहली बार आया था, एंड ही इज लाइक कि इस चैनल पे इतने पोलाइट क्यों है, सब लड़ता क्यों नहीं है. फिर Maybe. हमने लाइक वी वी ट्राई टू डू दिस थिंग जहाँ पे हमने फिर थोड़ा से आर्टिफिशियली And it लड़के. became really bad. हाँ, and it became I really didn't bad like and it. people liked it, But but I we didn't like it one bit. Sorry. exactly, because we are still not doing it. That's not a part of who we Nice. are. We are nice people. Yeah. तो Yeah. तो यार मेरे को यहाँ पे है कि लाइक आई रियली वांट एवरीवन, और अगर आप हैं लाइक अगर आपकी खुद की कोई फॉलोइंग है, एंड यहाँ पे देन वी कैन लाइक एक्सपैंड टू द पीपल हु काइंड ऑफ हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर पीपल, then like how to put yourself in circumstances where like आप बिल्कुल ऐसे ideas uh, s- like you are like kind of surrendering yourself to ideas which are completely outside of your philosophy. राइट, आई वाज सीइंग द लिफाफा एपिसोड ऑन आवर चैनल. कुछ कुछ एपिसोड है जो मैं कंडक्ट लाइक जिन्होंने जो मैंने नहीं किया, तो मैं ऑडियंस के जैसे देखता हूँ. लिफाफा वाले एपिसोड में उसने दिशा को एक बात बोली थी कि आई थिंक उनकी जो पॉलिटिकल अफिलिएशन है इट्स लेफ्ट लीनिंग, सो इज लाइक कि मैंने एक महीने सिर्फ राइट लीनिंग कंटेंट देखा, मैं समझना चाहता था. राइट, एंड ही इज लाइक एट द एंड ऑफ द डे आई वांट टू काइंड ऑफ, मैं तो किसी से ज्यादा लगाव करता ही नहीं, मेरे को तो क्योंकि मेरे को मेरे ओपिनियंस बनाने हैं, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बट आज की डेट में हम अगर एक एल्गोरिदम पकड़ लेते हैं, वी गेट सो अटैच्ड टू इट दैट वी आर नॉट एबल टू लीव दैट. इट्स लाइक वन आइडियोलॉजी, वी मेक इट आवर लाइफ, एंड हम कुछ भी करेंगे नॉट टू लीव दैट आइडियोलॉजी. So I just kind of am also blaming a lot of peers that I have in this group, जिनको लगता है कि वो बहुत स्टड है, और कि यार हम तो सही कर रहे हैं क्योंकि गन तो एक दो लोग ही मचा रहे हैं. ब्रो, यू गाइस डोंट नो, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम. मतलब I'm watching this show called Station 11. There is a dialogue in it. To the monsters, we are the monsters. And I've been thinking about it a lot. To the monsters, we are the monsters. And it is true, dude. And हो सकता है एक दिन हम भी नहीं बच पाए इससे. And that is something just I wanted to share. This video is not about कि मैं आपको आके बताऊं कि in the sense कि ये इंसान गलत है, ये इंसान गलत है. It's just like a cry for help कि where do we go from here, in the sense of without getting very aggressive. And it's just like a डर that I have that I wanted to share. Yeah, I have been thinking about it a lot. It's not even funny. I know. Yeah. There's this quote that somebody said in the comment, Joel D'Souza, and I had also read this quote a while ago, and says, "We don't listen to understand. We only listen so that we can respond." Yeah, man. And I think I have that problem where sometimes I'm just so busy listening that I forget that I, in my head, have to come up with a response as well.
because I'm just like soaking in all the information that I'm not saying I'm a great listener. I'm a terrible listener. I'm a it depends on my mood. Yeah. If I have to be a good listener or if I'm just irritated, I'm like, I'm not going to listen to you. You listen to me. You've seen that part of me. Yeah. But yeah, that kind of really resonates with me, where I realize that I don't know if it happens to you. I'm also able to pick up when whether people are listening to me because they want to understand, or they just want to jump to the next question, or do they just want to come up with a response. And I see that happen around me everywhere. एंड मेरे को लगता है वी आर ऑल्सो बैड लिसनर्स व्हेन वी आर नर्वस, बट इट्स ओके. अब नसीर सर के साथ एपिसोड है, मैं उनकी 50% बात ही सुन पा रहा हूँ बिकॉज आई एम सुपर नर्वस. मैं कोई है कि मेरी Yeah, अगली and I बात. want him to have a good time. So या मैंने एंड बोला, ठीक है, इसके बाद पॉज नहीं आना चाहिए awkward वाला. There should be हाँ, something that we have. but like when you get better at it, when you are like present, I am talking about that like time ki tab to you have no reason not to be the best listener True. in the world. No, आप तब क्यों? क्योंकि जब आप सुन नहीं रहे, आपकी ईगो बड़ी होगी और उसके बाद आपको लगेगा अब तो और जरूरत नहीं है सुनने की. एंड यहाँ पे मेरे को लगता है मैं थोड़ा पॉलिटिकल हो जाऊंगा, बट लेट्स नॉट. बट हाँ. Yeah. एंड It's only बट one हाँ. of us who's getting cancelled tonight, guys, and it's not. हाँ, आज हम दोनों कैंसिल होंगे. No, I just said एंड it's only one of us. It's not. oh, मैंने सुना it's not just one of us. I said only one of Maybe us. I'm a bad listener. And now we know who's the bad listener, but it's just one of us who's going to get cancelled tonight, and it's not me, for sure. Yeah. 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 I Uh, also have a problem with people who speak everything with so much conviction as if they have a PhD on that subject. मतलब भाई साहब आप कौन हैं? I'm sorry. Look, who gave you the authority? Like my professor did not have so much confidence when he was giving me a negative mark on a particular question, and he had a PhD in that subject. मतलब yeah. कहाँ से? I mean, I need that conviction as well when I recommend books, because I'm like, hey, I love this book, but I mean, it really depends on the kind of individual you are. People are like, you will love Pride and Prejudice because you liked Succession. I will always like, hey, you will like Pride and Prejudice because, it'll interest you. Because Succession, there are the actors and you'll be like, oh my God, this is Tom. And then you're like, नहीं, तुम बता. I'm like, कहाँ से लाते हो ये conviction? मुझे भी चाहिए. But I honestly have a problem with those people because I think it's not right. And it's reminding me of one thing that you said in one of the streams, that just because someone is loud doesn't mean that they're right. That's the kadwa search of my entire life. Yeah. I have to give. So I talk a lot about Susan Cain, and you talk about her as well. No, you recommended her podcast, I think, जो मैंने अभी तक नहीं देखा. Shame on me. But I love her book, and I think that gave me the confidence, and that actually also taught me how being an introvert is not something to be afraid of. There are your own power. You have your own things that you're good at, and you must constantly work on those. There will be things that you won't be able to achieve as easily as an extrovert might, like you won't be able to charm off crowds. But there are your own, perhaps I will be way better in comforting people when I'm interacting with them one-on-one. And so jo bhi hai, but like Susan Cain's quite taught me like, hey, it's okay if you're not loud. And that really changed the way I looked at people. All of a sudden, I was listening to what they were saying and not just listening to the decibel in their tone. Yeah. And that So, changed a lot of things for me. was there a time in your life when you really got intimidated by loud people? Yeah. My life was constantly about trying to fit in those people because I always wanted to be number one. I was like, if I go back to the person I was in school days, nobody would believe I was such an introvert. I was constantly there, like 9 to 3. The school life was constantly about being somebody else. And then at home, I would refuse to answer calls, refuse to go to parties and everything. And then all of a sudden in college, you realize कि आपको, you don't, after 3 p.m., you don't go home. You have to go to your room where you socialize even more. And then you're like, hey, I don't like this place. And then all of a sudden you're constantly trying to fit in, but nothing works out for you because you don't enjoy it and you feel like, hey, am I a loser or what? No, it's just you need your time. You need your own me time.
But And when dude, it's great, like you kind of like found this confidence, like ये मेरे को बहुत सही लगा. कितनी मेहनत लगी इसमें सुजन केन के अलावा, like how much of what were the things that gave you the confidence? Susan Cain was one. Susan Cain, what she did was she helped me realize, okay, this is the difference. But I was constantly struggling on my own because I would take breaks. Like, कि हाँ, ठीक है, I need time to revive my energy, etc., etc. But then Deborah Levy came. And there's this line which I tell everyone in her book, Things I Don't Want to Know. She said, in order to be a good writer, I had to first learn how to be loud. I had to first learn how to interrupt, then to be loud and louder, and then to write just in my own voice, which is not loud at all. Yeah. And I realized that, hey, if people listen to me when I'm not loud, that really matters a lot. Because like when you're loud, you lose your sanity. In my case, I can't think when I'm just being loud because my whole energy is being directed towards being loud. Yeah. मैं इसमें लाइक लोगों की भी और ओपिनियन जानना चाहता हूँ, लाइक जैसे आदित्य लिख रहे हैं, वाज द सेम टिल 20 एंड Priyanshi Singh, I relate to Vaani a lot. She is so me, and do let me know if you're finding like some interesting comments. People are saying Vinayak is 100% right. Vinayak, what is this? Yeah, Vaibhav, this is still very polite. Gun machao thodi. Let's monetize our frustration. Oh my god. Yeah. Um, करना है इसका, किसी को सोल्यूशन मिले तो मेरे को बताना. आई एम स्टिल नॉट डन, बट लाइक देर आर like two What are very you not done with? this rant. Yeah, please go on. I think most Yeah. of us will Oh, buy. someone commented we need that t-shirt. भाई साहब कौन है आप? That just came out, and then I realized I never used the word final. Yeah. Yeah. Do you remember this dialogue from Jab We Met where Kareena Kapoor's character says, chill, I mean, ये ज्ञान आप फ्री का बांट रहे हैं या इसके लिए चार्ज कर रहे हैं? And he's like, हाँ. he's like, ठीक है, क्योंकि चिल्लर नहीं है मेरे पास. Said it very badly, I'm sorry. But then again, I'm not an actress because I'm a very nice and honest individual. Shit. So ये क्या बात हुई? Very bad joke, sorry. But yeah, Yeah. because children, it's not that they're bad. I mean, it's just that after some time, uh, they do not really realize that they're not listening. They're just full of them. They don't even listen to what they're Yeah, saying. man. And sometimes they're like, hey, are you like, करेक्टनेस जीरो हो जाती है बिल्कुल, कहीं से भी, किसी भी टाइप की. yeah. And I almost feel like because they have this courage that, hey, nobody's going to correct me. Nobody's holding them accountable as well. Because there Yeah. are the 90% of their audience is going to enjoy what they say. And the moment somebody turns up against them, they're like, hey, not an issue. We'll build a new audience because there will always, always be somebody who will want somebody like them. Yeah. Yeah. बट हमारी फ्रस्ट्रेशंस कंटिन्यू रखेंगे एंड इस डिबेट को और मसालेदार बनाते हैं. वी हैव टू वेरी कूल पीपल लाइक जिनको हम इस डिस्कशन का पार्ट बनाना चाहते हैं. दे आर फाउंडर्स ऑफ दिस वेरी कूल ऐप. हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, बट पहले डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, पहले और रैंट्स करते हैं. Yeah. सो लेट मी हैव Pranika and Akriti. I am just adding them, and I Guys, think do like, like this stream. Like yeah, Samraj. like karo stream. And because like I think they are also doing something in the realm of books, so in some recommendations bhi le sakte hain. Because Vani, I want to know from you also how to be a good listener. Like, can you make a course on it, or can you recommend us Yeah, how to can be do a a good course on listener? it. Although, like, I'm not that great a listener, but और अगले और फिर एंड आपको फिर पूरी लाइफ ताना पड़ेगा if at yeah, all I'm really at any point in life you never listen I properly. feel very guilty when I'm not being a good listener. And then I feel even more guilty when somebody catches it, which you did a few days ago. And I was Yeah, like, okay, I'm sorry. And I'm sorry I'm bringing it up because I think I'm still not over it. But yeah, I did. we were talking about something and I was at fault because I wasn't listening. And you're like, hey, you're not listening to me. And I was like, yeah, I'm sorry. Oh, You अच्छा. remember Oh shit, good memory. But like Don't let's teach have from the like best. Pranika and like आकृति, अगर आप लोग अपने वीडियो चालू कर सकते हैं then like मजा आएगा. हम अभी
Hi guys. Hi guys. Hello, Hi. hello, hi. Hi Akriti, hi Pranika. Let's make this debate even more masaledar. And like Pranika and Akriti are like founders of Saga. Saga के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. But before that, tell us guys, like, do you guys consider yourself as good listeners? Um, Not really. बीच में somewhat not exceptional listeners, but इतने भी बुरे नहीं शायद. Yeah. I mean, And Aakriti is the worst listener, so I can say that with conviction. I listen depending on the topic. और अगर आप लोग नहीं सुन रहे थे तो डू यू गाइस हैव अ पोकर फेस जब आप लाइक ऐसे हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, या समटाइम्स लाइक आई व्हाट आई डू इज आई काइंड ऑफ want to make it visible that I am very uninterested in what you are saying. ये थोड़ा मीन होता है, बट कभी कभी तो ये कर सकते हैं. 6 महीने में एक बार तो कर ही सकते हैं. I think 6 महीने से तो ज्यादा ही कर सकता है. मतलब 6 महीने थोड़ा ज्यादा हो गया. If you ये feel चेहरा कैसा दिखता है वैभव, हमें भी सिखा दो. I think we also need हाँ. this. या वो उसके लिए हम कुछ कोर्स बनाएंगे. एंड लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑफ लाइक मोटिवेशनल गुरुज जो लोग आके बताते हैं जीवन कैसे जीना चाहिए. Like I'm particularly talking about gurus which are like who are like the cultish figures, the people who have a cult and they don't even know that they have a cult or they don't acknowledge. What's your opinion of those people? I think little bit, I would say take it with a pinch of salt. I think क्या होता है बहुत बार लोग को लाइन समझ नहीं आती. They are either ये भगवान बन गए हैं या this is utter crap, I will never listen. You know, that fine line I think is really needed to understand कि जो ये कह रहे हैं it is somewhere correct, somewhere wrong. You know, that balance I think is really needed. What do you think, Pranika? I mean, somewhere influence is always good in parts, but it's just that it's supposed to be in parts, and then you have that choice of taking whatever you want and leaving whatever you don't. And somewhere, maybe sometimes the choice is not always there, given how cultish things become eventually. Yeah. Do you have people in your life who call you out when you are being terrible listeners? Yeah. Yeah, definitely. I mean, I technically just did. Yeah, she just called me out for being a terrible listener. For sure. I think definitely friends, family, Yeah, ready to call out. Yeah. Yeah. And like, do you guys have any recommendations in regard to what can a person like refer to in the realm of books, movies, podcast, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यार यहाँ से आप अपना skill of listening better कर सकते हैं. I don't know about skill of listening, but since you spoke about like motivational speaker and influence and cult, तो अब TV show, you know, Netflix पे तो काफी documentaries है. I mean, we've seen the Osho documentary. It's Oh, the Wild Wild West. Wild Country is basically a cautionary tale of like Yeah, I mean, how bad it can get. Like yeah. I mean, the new ones also come. The keep sweet, pray and obey. That's also supposed to be a nice. That's another one. That's really. Yeah. I think with Osho, it's really interesting because I used to live in Pune, and Osho camp is very big in Pune, and a lot of people who are bhakt of Osho sayings. So it's वो या तो आप एकदम बहुत पागलों की जैसे फॉलो करते हो या आपका एक वो है hatred towards Osho. You know, वो balance कभी नहीं दिखता है. Which I think Wild Country के बाद did Osho lose on his following कि लोगों के ऐसा हुआ कि हम आंखें खुल गई या they were still like the bhakts? Not in India, I would say. India में तो जो था पहले से ओशो का that craze is there only. Like I think I would say foreigners कम आते हैं because पहले बहुत foreigners पूना में दिखते थे because I lived for quite some time in Pune. तो बहुत दिखते थे foreigners, but since Wild Country, yeah, definitely वो एक international craze नहीं होता exotic Indian motivational speaker का कम हो गया for sure. हाँ, मतलब वो वाली भी एक तो हमारी जो एक इन्फैचुएशन विद वो वाइट स्किन होती है ना, वो भी काफी वो है कि अरे ये बोल रहे तो कुछ सही बोल रहे होंगे. वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर दैट समवेयर दैट exoticness is there कि अरे हाँ इनको कुछ ज्यादा पता है. I think वो एक राजनीति जो प्रकाश झा की मूवी आई थी ना, उसमें एक सीन है where रणबीर कपूर is sitting
लाइक वो मतलब विद हिज फादर हु इज अ पॉलिटिशियन, और वो कुछ बता रहा है कि यार डैड सो माय नेक्स्ट ये वैसे इंग्लिश में बता रहा है, लाइक आपको क्या लगता है? बोले मेरे को समझ नहीं आया बट अच्छा लगा जो भी तुम कह रहे हो। वे फील ही ले जाते हैं हम, बिकॉज कि हाँ कि द इमेजरी जो हमारे हमने दिमाग में बना ली ना कि हाँ नहीं सही होगा जैसा भी। या वाइट वैलिडेशन कह रहे हैं निखिल इसको, निखिल कह रहे हैं या वाइट वैलिडेशन। अंचित इज आस्किंग इज ओशो गुड और बैड? आई डोंट वांट टू मेक इट अबाउट I had एनीवन। read या his. I mean, when I was a child, हमारी library में कुछ like articles आते थे, and a section was particularly dedicated to Osho, and I found that made sense. Like his articles, like his preachings, kind of made sense. So and then I never pursued it because I was never interested. But the articles and the sayings did make sense. So some of it somewhere, I think obviously if he's saying something, कुछ तो सोच के ही बोल रहा होगा for sure. So definitely, as like there is some good things that which people can take away, which work well. मेरे को लगता है इसमें ना जो द आइडिया ऑफ अस वांटिंग टू बी फॉलोअर्स वाली जो चीज होती है ना कि बस किसी का भी फॉलोअर बनना है, कोई बता दे लाइफ में क्या करना है। हाँ, मैं अगर जैसे अगर अभी कुछ चश्मे वश्मे पहन के करूं लाइक ऐसे राइट, लाइक ऐसे कुछ फिर ऐसा एक्ट दूं, मतलब ऐसे फील आ जाएगी ना कि वानी देयर इज अ लायन इनसाइड यू, लाइक ऐसे कुछ भी उसको जगाओ, तो आपको लगेगा कि मतलब इवेंचुअली इफ आई आर्टिकुलेट इट वेल एंड लाइक मैं ऐसे चार चीजें बोलता हूँ कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ वॉइस इनसाइड यू, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो मतलब वो ये कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स भी अगर कभी कभी बोल दो तो ऐसा लगता है कि शिट, जैसे आप लोग कह रहे हैं ना तो ओशो वाला मेरे को नहीं पता है उसके बारे में कि उनकी किस डेप्थ की फिलॉसफी है, बट लाइक इन जनरल इट्स इजी टू गेट अवे विद थिंग्स इन दिस जोन। And that also brings me to the question of self-help books, because I am a big fan of self-help books because I have found very good self-help books in my life, but self-help के नाम पे बहुत shit भी बेचा जाता है। Yeah. No, I agree. I mean, personally, I don't read a lot of self-help. It's something that doesn't interest me per se. But for sure, I mean, some books have, I mean, they have a big following. Now, if you look at Ikigai, Ikigai के बारे में बताओ यार मेरे को, let's talk about Ikigai. Is it as good as people say it is? see, I have a copy at home which is Huh. collecting dust. So now you make But have what you you have. no? Is it collecting dust after you having read it, or I'm sure. After having read, say, 2-3 pages, the first 2-3 pages. I think ऐसी like personally like I really don't enjoy a lot of self-help, but it's nice to buy some for Instagram photos and to seem a little aesthetic अच्छा बन गया थोड़ा cup of coffee और self-help book के साथ. But I mean personally I think ये होता है कि वो आपको क्लिक होना चाहिए, whether it's Ikigai, whether like we spoke about Osho कि जैसे वानी ने कहा some things made sense, it's कि उसको क्लिक हो गया वो बात कि okay at this moment in her life in that circumstance when she read it made sense. I think for self-help books also a lot of times it can be nonsense, yeah, but बहुत times it can be very educational as well. but like Akriti, have you read Ikigai? Vaani, have you read Ikigai? आप में से किसी ने? I've listened to the audiobook. It was 3 hours long. How is it? How is it? How is it? Because I'm very curious because a lot of people gift that book to each other, and मेरे को याद है उसका sky blue color का cover है, right? Correct, yeah. Now I there's think a it's come second in part, different right? colors now. Yeah, there's a second part. There's a purple color as well. Yeah, Guys, हमें comments में भी Correct. बताओ Ikigai के बारे में. I'm There's really Ikigai curious to know. There's Ikigai, then there is another that's Danish philosophy and everything. Yes. To be honest, I feel we also I found it repetitive because I thought I already had mechanisms to slow down. It's basically about slowing. Ikigai just tells you how people tend to live longer in Japan, in some certain remote area. I can't remember the exact place. And I come from a place where people tend to live longer as well because I come from a village area. And then वहाँ पे सब relaxed life जीते हैं. So it's essentially about how to slow down, find the meaning of your life and how to involve your profession, how to make your profession around it so that there's no stress as such. Something like that. But yeah, please.
But there's also another term. I didn't read a book on this, but एक ऐसा ही term था. I think higgy करके, which Yeah, was Yeah. who? the I don't know how to Swedish pronounce it. Yeah, This, something like that. yeah, which was I think taking joy in everyday small things. activities of life. Yeah. Again, like I felt like उस पे भी बहुत popular books आई थी, but Can once I again, just be honest? I feel like all this is just a marketing gimmick of, yeah, they pick up an aesthetic word, they pick yeah. up an exotic word, and they kind of present to you activities that will help you slow down. And because everyone is so caught up in the circle of life today, it sells very well because everyone wants to slow down, but they do not know They how don't know to. how to. But And like, yeah, Vani, like to play devil's advocate, like आपको तो सूजन कीन पहले मिल गई ना, but जिन लोगों को नहीं मिली, like yeah, उनके लिए तो yeah, इकिगाई वर्क कर सकती है, right? yeah. Some people are buying it and it's working because it's working for people. Correct. That is, I mean, somewhere organization of thought, of mind, of person, of whatever there is, that's become a trend in a way. And that's the one that everyone is playing out on. That's like become a philosophy. And then उस पे आप जाके थोड़ा research करो, then you see, oh, this is going to help me, and this is going to, and somewhere it does help some people. It does, if you have an organized closet, you're going to be early in the morning because you know where to look for your things, and that's somewhere that influence is coming through in a good way. और मैं एक बार सर्कल बैक करना चाहता हूँ हमारे ओरिजिनल आइडिया पे जो था द मोटिवेशनल स्पीकर्स का. पता है मेरे को जैसे टेक्नो म्यूजिक और इनमें बड़ा इंटरेस्ट है, तो कभी कभी आप देखते हो कि जैसे एक बॉयलर रूम करके कुछ इवेंट्स होते हैं जिनमें ना कोई आके अपने इलेक्ट्रॉनिक वो कर रहे हैं, तो आप कभी कभी पीछे देखोगे कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट जैसे भीड़ में खड़ा है. तो ये लोग क्या करते हैं ना, एक दूसरे का काम बड़ा सेलिब्रेट करते हैं. बट इफ यू आस्क एनी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हुम डू यू लिसन टू, एंड लाइक नो नो वन, लाइक ऐसा आपने ये चीज नोटिस की होगी, राइट? कि वो किसी और को नहीं सुनेंगे बिकॉज उनको इंसल्टिंग लगता है कि यार हम तो किसी और के थॉट्स ही नहीं लेते. अगर वो सीक्रेटली सुनते हो टोनी रॉबिन्स वगैरह को, कभी पब्लिकली ये चीज नहीं बोलेंगे, विच इज ऑल्सो स्केरी बिकॉज यू आर मेकिंग इट अ जीरो सम गेम. लाइक अपने आप ही ना, मतलब ये है नहीं जीरो सम गेम, बट तुमने बिकॉज ऑफ योर कंस्ट्रेंट्स एंड योर ईगो यू मेड इट अ जीरो सम गेम, विच रियली पिसेस मी ऑफ बिकॉज आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी. आपने 4 ऐसे आइडिया सीख लिए लाइफ के, और फिर बहुत ही दुनिया से आप दूर रह के अपनी आइडियोलॉजी बना रहे हो. I agree. Somewhere it's not based in reality. The ideology that it's not grounded. It's very Yeah, it's not grounded. Nicely put. Yeah. spirit. I wouldn't say spiritual also, but yeah, it's not grounded. Yeah. And आप लोग जैसे like which are the podcasts that you guys listen to in general? I'm very curious. In general. Wow, I listen to it's all about fiction books. There's a romance podcast I listen to, some crime podcasts, some true crime, as all famous Instagram has made girls famous for listening to true crime podcasts. So और somewhere I ये like that. why is this like the case? Don't know. It's a trend. It's a trend that apparently women listen to true crime podcasts. And it's you tell me, Aakriti, Vaani, haven't you all seen that on Instagram? I've definitely seen, makeup reels, nail reels with the true crime story being narrated in the background. जहाँ तक कि Seriously? yeah, definitely. And where, they grip you क्योंकि आपने एक part सुना 60 second का reel. You definitely want to watch the second part because now I need to know किसका murder हुआ है, किसने क्या किया है, and it's not available for me online. And जहाँ तक कि I'm seeing this trend come in one of the fiction books I'm going to read next, which is on my list. It's about a girl who is a true crime podcaster who does podcasts about this, which I thought was very interesting कि ये trend कितना pick up हो रहा है. And I'm sure, Vani, have you listened to any true crime podcasts? Yeah, but like मैंने अभी उनके साथ लोगों को पॉडकास्ट, ट्रू क्राइम, डॉक्यूमेंट्रीज, इन सब में काफी इंटरेस्ट है. मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है बिकॉज पॉडकास्ट में आई वांट टू नो हाउ गोरी डज इट गेट, लाइक कि किस मोमेंट पे जाके लाइक कि हाउ एक्सप्लिसिट इज द कंटेंट, लाइक कि जब आप लाइक ऐसे पॉडकास्टिंग स्टाइल में कोई
लाइक मेकिंग ऑफ अ मर्डर या कोई ऐसी चीज लाइक बता रहे हो, तो लाइक I'd be like very curious to see अगर कोई अच्छी कमेंट्स में भी किसी के पास कोई लाइक रिकमेंडेशंस हैं ट्रू क्राइम की, और आप लोगों के पास भी है तो प्लीज दीजिए, बिकॉज मैं थोड़ा दूर हूँ इस दुनिया से. Maybe. Yeah. There's one which is called Not a True Crime Podcast, which is a true crime podcast. But they have a nice selection of murders in that sense. Got Nice. it. I think the closest I come to listening to true crime podcast is listening to Noble Blood, which is actually a history podcast, Yes. and What is it about? it talks about each episode picks up an individual who had a very interesting death in the past. Everyone dies in this podcast, but it just tells you how. And it's very Oh, funny and interesting because some of those things are like, hey, this person just ended up at the wrong time here. It's what's like the duration of these podcasts? hardly 30 minutes, less than that. I fall asleep if I listen a lot. So I usually tend to listen to podcasts that are under 30 minutes. Nice. Yeah. एंड जो हम लाइक बात कर रहे हैं, द मेन टॉपिक जो हमारा है ऑफ लाइक द आर्ट ऑफ लिसनिंग, हाउ पीपल आर फॉरगेटिंग इट, लाइक तो लेक्स फ्रीडमैन के अभी पॉडकास्ट पे अभी सूजन केन जो आई थी, जो क्वाइट की ऑथर है, राइट, उनका एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट है. एंड ना मैं इतना फैसिनेटेड हूँ उससे बिकॉज दैट इज माई फर्स्ट लाइक सूजन केन, लाइक मतलब पहली बार मैंने उनका कुछ भी काम देखा या सुना या पढ़ा, राइट, लाइक दैट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट. तो लेक्स की लाइफ में जैसे इंटरेस्ट लेती है ना, इट्स क्रेजी. लेक्स, और वो ना जेन्युइनली, नॉट लाइक फेक क्यूरियोसिटी, वो बैठ जाती है, बात करें तुम्हें क्या लगता है, एंड इट्स अगर आप कोई फेक करता है इसको तो पकड़ में आ जाता है, बट वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड थी यार कि यार तू मेरा छोड़, तू बता तेरे को क्या लगता है. तो वो You know बहुत what I सही है. really liked about Susan Ken was because for somebody like me, most of the people that you see online are extroverts. And so most of the personalities that you get to see are people who are not like you. So just everyone says na ki hame representation mil rahi hai. Susan Ken is that one representation for me over there. And I'm like, hey, it's okay to be these things and it's okay to be such things. So you don't have to get conscious. It's like a big thing when you see somebody, when you tell me how the interview went and I find things okay, this is how I also like to talk to people. And you see other guests and they might not do the same things and you're like, hey, is there something wrong with me? But then you see an individual who's being celebrated and you find yourself in that individual. It's a big thing. Yeah. And उनका introversion जो है, it doesn't come in the way of her being a like a like a good speaker, right? Like she's a extremely good speaker. Absolutely. तो वो वाली चीज कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कैसे बात. Exactly. वो बहुत ओवरकम करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है. एंड लाइक मी बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, I'm going to really recommend the Susan Cain podcast. Like वो जाके सुने. You know, I believe like for a long time, people have confused shyness with introversion. Yes. Yeah. There was a comment that I read that said, can introverts be alpha people? Of course they can be. Just because you're an introvert doesn't mean you can't be an alpha. Yeah. Maybe Guys, introvertedness sometimes becomes about it's not just about yourself, it's about how you perceive the environment as well. Now in the MBTI test, the way it is, it's technically not introvertedness in terms of self, but introvertedness in terms of environment, how you react with your outside environment. So that's a common misconception. Right. Yeah. तो guys हमें comments में बताइए, are you introverted or are you shy? Like हमें जानना है इस चीज के बारे में. And मैं जब before I end this segment, I want to talk about the cool things you are doing, guys. Like Saga के बारे में अब बात करते हैं. Pranika and Aakriti, guys, बहुत ही cool चीज कर रहे हैं. These guys are making the Netflix for books and the name is Saga. मेरे को बहुत ही कूल लगती है. इनकी कैप है, एवरीवन शुड चेक इट आउट. इफ एनी ऑफ द मॉडरेटर्स आर वाचिंग, लिंक डालो. तो लाइक व्हाई डोंट यू गाइस टेल अस अबाउट सागा. आप बताना, मैं थोड़ा बहुत जो मेरी समझ है, इट्स लाइक कि
बुक्स का एक बहुत ही वेल क्यूरेटेड कलेक्शन है. जैसे नेटफ्लिक्स हर मूवी को हैंड पिक करता है, आप बुक्स को हैंड पिक करते हैं. यू आर काइंड ऑफ ऑल्सो गिविंग लाइक अ प्लेस टू अ लॉट ऑफ ऑथर्स आउट देयर टू शोकेस देयर वर्क. और आप सीरीज फॉर्मेट में भी बुक्स वहां पे डालते हैं जो बिंज कर सकते हैं, बिंज रीडिंग कर सकते हैं. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ सागा. व्हाई डोंट यू गाइस टेल अस अबाउट इट? Yeah. Sure, why not? So, yes, we are Saga Fiction, digital publishing app. You can find us on Google and Apple stores. But it's basically, as I think Vaibhav has put it really well, it's a Netflix for books. So, if you're ever looking for something you want to curl up with, which is, आपको कभी बारिश का मौसम है, आपको कुछ अच्छा रोमांटिक पढ़ना है, you just want to curl up with some long read, you have an off day, we have something like that for you. And if you're on the go, you're in your metro, you're in your train, you're waiting for the stop, we have something called episodes, which is why again Netflix comes ये in किसी ने plus. किया है पहले कि बुक्स को एपिसोड्स के फॉर्मेट में ऐसे? I mean, it's there. I wouldn't say that it's not. अच्छा. We're not going to claim that we are the first, but maybe we're the first with interesting content. So Nice. maybe, but why doesn't the audience guys go check it out? See our app. Tell us what you think about it. We're there. Instagram, And it's for both Android and iOS, right? Yes, Android, yes. iOS, free to download, and not to plug it in too much, but it's really cheap. मतलब हम ज़्यादा महंगे किताबें नहीं देते. बहुत अच्छा free content भी है. A lot of our Yeah. writers are happy to write for free and to Yeah. let audiences read. So Yeah. nice way to support new writers. I feel like using that वो William Dafoe का Spider-Man वाला ऐसे good, I am somewhat of a writer myself. मेरे को ऐसे कि देखें लोग. But काफी interesting guys, and wish you guys all the best. Saga seems very interesting. हमने लाइक मॉडरेटर्स लिंक आपने अपने चैट में तो डाल ही दिया, डिस्क्रिप्शन में भी सागा के बारे में डालिएगा. एंड एवरीवन गो एंड चेक आउट सागा. बताना आपको कैसा लगा. अब मेरे को आप दोनों से एक सवाल पूछना है कि फॉर ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स आउट देयर, व्हाट वन एडवाइस डू यू हैव? तीनों के लिए सवाल है, मैं भी टिप्पणी दूंगा, चारों एक एक. इफ लाइक यू कैन गिव वन एडवाइस. या I think I would say don't be boring. Try to make it fun, relatable, without the ज्ञान देने के अलावा थोड़ा सा थोड़ा चटपटा करके. अगर हमें वो चटपटा कर करके ही तो गन चला रहे हैं. और वो चटपटा तो गलत चटपटा हुआ. सही हाँ, तो आप कौन से चटपटे की बात कर रहे हैं? उनको वहां पे इतना लीवे मिल गया इसलिए तो गलती हो रही है. अब उनको लीवे मिला है तो जो सुन रहा है उसको लीवे नहीं लेना चाहिए ना. थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडेड तो अपने आप को भी बनाना चाहिए. जो भी कोई कह रहा है, यू शुड नॉट लिसन एंड फॉलो ब्लाइंडली, आई थिंक. Yeah, and like what about you, Pranika? आप like क्या advice देना चाहती हैं? I would say know your audience. Sometimes They know it's it very well. Oh, you have no clue. They know it your very audience better. No, it's just censorship somewhere is important, and it needs to come in. So I guess in that sense that they need to understand that with power comes big responsibilities as well. Now quoting Spider-Man again, but yeah, it's because they have that sort of power, then they should understand that you can better lives. That's a good part of it. Vaani, what about you? So I don't think they will in any case care about the advice we give them because they are terrible listeners. But I think you think they will care, but I don't think they care about the ripple effect that they are causing. पर मैं वही सोच रहा हूँ ना, क्या पता किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए हमारा वीडियो देख के. Just step down of the pedestal and look around. Not many people know. Yes. And yeah, if I can add to that, like just like अगर आप pedestal से नीचे आते हैं, maybe have your inspirations also outside of like your field, and like have people you look up to, because now उससे आप काफी grounded रहोगे.
You know what? I also feel they're very afraid of coming across as people who are vulnerable. Yeah, Yeah. definitely, You right? want to Because keep that aura, I am above you. वो उनको एक फीलिंग देना है कि मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ. वो आई थिंक तब चली जाती है जब आप और लाइक अरे यू नो व्हाट लाइक बी अ फैन ऑफ पीपल आई वुड से. मेरे को लगता है कि वो आपको काफी ग्राउंड करेगा कि इन द सेंस कि किसी चीज के फैन हो, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री के हो या आपकी इंडस्ट्री के नहीं हो, जहाँ पे आप लाइक झुक जाते हैं. क्योंकि आई थिंक इवेंचुअली दिक्कत यही होती है, कहीं भी नहीं झुकते, राइट. एंड फिर तो ईगो तो मतलब आपको मतलब आपकी बढ़ती ही जाएगी एंड देन एंड उसका बहुत ही गंदा रिपल इफेक्ट आएगा एंड बैड थिंग्स विल हैपन एंड एवरीवन विल बिकम अ बैड लिसनर एंड वील ऑल डाई. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. Thank you so much for joining my TED Talk. Thanks for I want to change your answer listening to you guys. Yeah. नहीं बताओ ना प्लीज प्लीज प्लीज. Yeah. वही आप हम अनफिल्टर्ड बात कर रहे हैं, ठीक है. वो समदीश ने ले लिया है टर्म अभी, बट लाइक हम भी अनफिल्टर्ड बात कर सकते हैं. Oh gosh, I think be better listeners then, since Yes. since we're talking about it. I think that's the correct advice. But thank you so much like Pranika and Aakriti for joining. अब मैं और वानी conversation continue करेंगे and guys do check out Saga. You guys have made something very cool यार and Thank you. And do check out Saga guys and thank you so much for Please joining. do. Thanks guys. Thank you. Bye. Bye. I did a very weird bye at the end, and then I realized it after I was doing it. Nice. ये ना you know the conversations that like we ऐसे याद है हमने 1-2 गेस्ट एपिसोड्स किए थे जहाँ पे गेस्ट चले गए और उसके बाद भी इतना अच्छा एपिसोड हो गया, लाइक उसके बाद भी इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हो गई. डू यू नो हैव यू सीन दिस रूम? मैं रिवील करूं कि लोगों को पता नहीं है कि ये हमने एक प्रॉपर हमने स्टूडियो बना लिया, लेकिन हमने एक स्टूडियो में पॉडकास्टिंग रूम बनाया है. दिस इज फॉर ऑल द लकी पीपल हु आर स्टिल वाचिंग. लेट मी शो यू गाइस. रुको. ये बेसिकली ये प्रॉपर पॉडकास्टिंग रूम है. ये इस पे हमने ऐसे Is there a light that will come from behind? हाँ. Nothing. तो मैं अभी यहाँ मोड़ना नहीं चाहता क्योंकि थोड़ा सा हाफिजात सा हो रहा है सब कुछ. बट हाँ मैं ऐसे लोगो दिखा के थोड़ी सी फील बना रहा था और बहुत शांत और लाइक कलर्स के साथ काफी खेला है इसमें एंड लाइक या मजा. This is my favorite color combination. Seriously? Yeah. हाँ मैं और दिखा सकता हूँ. So हम ना यहाँ पे मैं थोड़ा ज्ञान बांटूं. Can I be like a motivational speaker for like 5 minutes? मैं जाऊँ? Yeah. मैं seriously ज्ञान बांटूं. Genuinely guys. ये लिख मतलब कहीं ना नोट्स बना लो, कभी ना कभी काम आएगा क्योंकि मेरे बहुत लेट आया था. Okay. Listening. Soundproofing and acoustic treatment are two different things. ठीक है. तो हमने ये जब कमरा पहले सेट करवाया था ना, इसको साउंड प्रूफ करवा लिया. अब साउंड प्रूफ करवाने का मतलब ये नहीं है कि वो कमरा लाइक अकूस्टिकली ट्रीटेड है. acoustic treatment ये कि is that the room like good enough for like voice and audio recordings and like podcast recording? नहीं. तो ये कमरा ना साउंड प्रूफ करवा रहे थे कि हाँ इसकी साउंड प्रूफिंग चल रही है वगैरह. तो जब ये रेडी हुआ ना, मैं अंदर आया एंड आई गॉट वेरी स्केयर्ड क्योंकि मेरी आवाज में एको आ रहा था. मैंने कहा इतना खतरनाक मटेरियल लगा के एको कैसे आ रहा है. मेरी हालत खराब हो गई. ये संडे की बात है, लास्ट संडे की. आई कॉल्ड विनायक. आई हैव अ फ्रेंड, shout out to him, his name is Franco Balla. He's a sound engineer in Bombay. I think he's working with a very big musician right now. And मैंने ऐसे 2-4 फोन मिलाए और फिर मैंने गूगल करने चालू किए कि लाइक अकूस्टिक ट्रीटमेंट क्या होता है एग्जैक्टली. तो बेसिकली ये ना इसने इस कमरे को आइसोलेट कर दिया है. बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की बाहर नहीं आएगी, बट अंदर की जितनी आवाज है ना वो इधर उधर बैठ रही है जिसकी वजह से एको क्रिएट हो रहा है. फिर उसके लिए आपको रखना होता है मटेरियल, आपको कमरा भरना होता है. आपने सुना होता है ना कि खाली कमरा होता है तो उसमें एको आता है. फिर
imagine like a motivational speaker tuning in right now and they're like, क्या? मैंने तो ये टॉपिक तो कुछ मेरे और बारे में से बात करने वाले थे. बना. Oh God. हाँ, है ना. तो कहाँ था What मैं? was Vinayak not ready for? The दिस अकूस्टिक ट्रीटमेंट वर्सेस, क्योंकि हमने जितना माथा खराब किया ना वानी, फिर yeah. लाइक अगले दिन जब लाइक Correct. विनायक आया आया तो मुझे हमने बहुत नीचे वो हो रहा सोफा था. जो पड़ा था उसकी सारी गद्दियां हम ऊपर ले आए. इन Yeah, गद्दियों yeah, में yeah. वो पूरा वो जो उसके पोर्स वाला जो काम है वो साउंड अब्सॉर्ब कर रहे थे. फिर हमने पीछे पूरी गद्दियां गद्दियां लगा दी. इनफैक्ट फिर विनायक स्लीपवेल से जाके एक पूरा एक वो बेड का फोम खरीद के लाया. फिर हमने वो किया एंड यू नो इट्स हियर, कैन आई शो इट? Yeah. हमने इस पे ब्लैक ऐसे कपड़ा लगाया हुआ है, ये फोम है बेसिकली. तो अभी मेरी वॉइस में पता है एको क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने इतनी सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जो साउंड Is there एब्जॉर्ब an कर रही AC? हैं. देयर इज एन एसी एंड द एसी इज सुपर साइलेंट. बट क्या कहते हैं, someone just commented, is this about Sandeep and Prakhar beef? It's about नहीं acoustic guys. it's about acoustic treatment versus soundproof. Oh my God. Guys, तो ये stop गलती thinking it about yourself, okay? It can also या be about us sometimes. या भाई साहब आप हैं कौन? भाई साहब कौन है आप? कौन है आप भाई साहब, कौन है आप? तो या मैन लाइक इट्स लाइक अ लॉट ऑफ फन कि ये कमरा बन गया है. एंड वी आल्सो इनकॉर्पोरेटेड लाइक अ ट्रांसपेरेंट बोर्ड इन इट. मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको. Yeah, I saw that. इस पे कल इसके Major. वाइट मार्कर Oh. आने वाले हैं. सो या I'm not even a part of the group called Chalchitra Talks. वहाँ पे भिंडी की बातें होती हैं. Hey, I can also make. Can I cook when I come this time? Like, या you guys can be my डेफिनेटली. lab rats. Sorry, या it came across the wrong way. या दिस इज Rajma. व्हाट हैपेंस जब आपकी ईगो बड़ी हो जाती है ना, तो आप लोगों को लैब रैट समझते हो. इसको ये कंटेंट देते हैं, इसको ये भिंडी देते हैं, राइट. बट यू नो जैसे लाइक भाई साहब आप हैं कौन की टी शर्ट्स बनवानी चाहिए आज. think that's very like, आज I don't think we'll you do know that. Yeah. let's showcase it to people. The Discoveries episode of Hindol and Disha, वहाँ पे हिंडोल ने एक लाइन बोली थी कि what doesn't kill you gives you Gives you content. content. Can you share your screen and open Kadak merch? Give me 1 second. Vaani wasn't ready for this. I wasn't ready and मेरे screen पे बहुत सारे tabs खुले हैं. And I do not want anyone to know. Okay. Let me just. There's वो लोग कह रहे टेस्ट ऑडियंस बोलो वानी हमें लैब रैट्स मत बुलाओ. there's this. I don't know where this housefly came in from, but I'm not. Yeah. Test audience. I'm sorry about that. Yeah, please open the link. No, yeah. So इसमें That's zoom not in करके yeah. so So that the you look at the fourth one. Look at the fourth one, guys. What doesn't kill you gives you content. and it's available in multiple colors. I'm And going to हिंडोल को जो आज नींद आएगी क्योंकि हिंडोल और दिशा मेरे को स्नैपशॉट्स भेज रहे थे कि इट इज देयर ओरिजिनल कोट. मैंने उनसे पूछा ये तुम्हारा ही कोट है? हिंडोल दिशा ने मेरे को स्नैपशॉट भेजे उनकी लाइक डिस्कशन के. like the first time Hindol used it on his Twitter back in 2015-16. हाँ उसने And I was like, 2015 का स्नैपशॉट भेजा कि क्या. but yeah, it's available in blue. It's also available in Yeah. black. It's Does available it come in black? Yeah. this navy blue. This is navy blue. This is royal blue. They've gotten the colors wrong. Sorry, guys. ये हो जाएगा ठीक. Is white and I think I'll get the is white one or the pink soft one. pink. Soft pink. But सही है guys. Do check it out. Also, guys, no wait. I'm so Yeah. sorry. There's also like this L to the OG. Yes, ये भी हमने अभी नहीं दिखाई थी. We have also for all these this success design. out there. अक्टूबर में जब सीजन 4 आएगा यही पहन के हम स्ट्रीम करेंगे और सक्सेशन को इसी में टैग करेंगे so that we also get invited to the Emmys or whatever they get nominated to. Like at least audience passes मिल जाए हमें. Yeah, and these designs are made by Vinayak, and Vinayak OP हो जाएगा इस chat में. And it's And available in this olive green color, the white color, the gray, and the और black. अगर आपको कोई कलर चाहिए तो बस मैसेज कर देना, हम डलवा देंगे. Yeah, there's also this one, but it's not safe for. We are a family show, so I'm not going to reveal this. तो इसे आप कड़क मर्च पे जाके. Little Roy, yeah, Little Roy F. It's a family show. And there are other teas also. This is nice also because as
Yeah. family of Chalchitra Talks, we love using the word nice. And there's But also note back, but I'm going to stop yeah, now because I think soft. मेरे पास Yeah, इतना लोगों ही को time. This was my time, guys. yeah, but like extremely happy with like these designs and मेरे को बड़ा ऐसे वो feel हुआ. You know, in therapy there is a concept कि when you confront someone whom you won't be able to confront in real life, मतलब You maybe do. some yeah, so there is like ऐसे आप proper confrontations कर सकते हो where Okay. you imagine someone is sitting, तो आप उनको क्या बोलोगे, ऐसे movies वगैरह में भी देखा होगा, but it's kind of जो हम basically shower में करते हैं. Sorry, there's a Yeah, house fly. But no, I heard. we do that in shower now, May I like ask we who was the last person you confronted in therapy? confronted in shower. Who was? My shower is my therapy. Who was it? um This is a good question. the name then the I'm going to name ask this question okay, in the next interviews now, like to the no guest. yeah, this is a good question. The person I confronted, the initials are B. The name starts with B. B for ball. Huh. B for subscribe. This is like I was like V for Vaani, but then I was like, okay, no, because Vinayak bhi ho sakta hai. B. Can I B. go through your contact list this time? भिंडी. भिंडी इतनी पतली क्यों है? अच्छी Yeah. से पकी क्यों नहीं? Sorry. B से और क्या क्या हो सकता है guys, chat में बताइए. Book club. I confronted the book club. Baby Yeah. shark. Yeah. Baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark, do 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 do, baby shark. Can like guys like B से कोई बहुत अच्छा अरे भुवन भुवन बाम. भाई. You like okay, we'll give like थोड़ा बजट के हिसाब से सोच के बोलते हैं. We'll give a like L to the OG और like दूसरी कौन सी है? You want to discuss it internally? अबे वो बजटिंग इश्यूज है तो थोड़ा देख लो. जो सबसे अच्छा सबसे फनी आंसर देगा, whom हम did उसे Vaibhav एक succession- like हाँ हम उन्हें जो भी एक टी शर्ट succession एक टी-शर्ट एक देंगे. टी शर्ट वो जो भी सौरभ को बोल देंगे कि मेरी सैलरी से काट ले कि लाइक एंड जो भी बेस्ट आंसर देगा एंड लाइक आप लोग भी डिसाइड करना, हम भी डिसाइड करेंगे कि who is the person जिसका initial B से start होता है that I confronted in my shower. भीतर का आदमी. भीतर का आदमी. Nice one. To the moon. बोल रहे विनोद also. विनोद अंचल. Nice. Bobby Deol. Bobby Deol Jay Singh. Okay. भीतर का आदमी बैटमैन विनोद, बेटमैन विनोद ही हो रहा है. Guys, repeat So- मत करो. I'm like the teacher. Be creative, yeah, kids. क्या चल रहा है? बावा. बाबा. Question repeat करो. Official Bye. calls keep getting in the way. Whom did Vaibhav confront in shower? I'm going to stalk your Insta following. Babu Bhaiya, Bob Dylan. उनके initials हैं B and the person with the most creative answer wins a t-shirt. And the t-shirt says, what doesn't kill you gives you content. Bahubali. Babu Bhaiya, Babuji, Bhidu. Billie Eilish. भयानक आत्मा. There's a housefly in. ये हाउस ये कोई और फ्लाई है ये. There's a housefly. बोल चित्र देवशी. Nice. T-shirt मुझे ही दे दो वैभव. हाँ अभी तक कोई आया नहीं है. So the winner of the like the competition is Vaibhav and the t-shirt is won by him, and this is what happens when you have big ego and when you don't have this problem as well. ये मैं वही कर वही इसी joke Me पे खेल myself रहा and I. Vaibhav is on his route to become is en route myself. हूँ. Abhinav is saying Bo Burnham. Oh, Bob Odenkirk, DG Verma. Nice one. बाबूराव गणपत राव राधिका आप्टे नहीं, बाबूराव गणपत राव आप्टे. बानी. Oh, nice one. प्रियांशिका का भी सही है. विनोद. Dude, like, has anyone like? What do you think of Bani J?
I know I should be inspired by her because she really is working on her health and fitness routine. The rest I don't know. बट बानी वानी के हिसाब से बोला था मैंने तो. Yeah, like because of her, I think Punjab mein a lot of people write my name as Bani. Because I think she's from Chandigarh. आई थिंक सो. उसका रोडीज का ऑडिशन शायद चंडीगढ़ का ही था. चंडीगढ़ के सबसे खतरनाक रोडीज ऑडिशन होते थे तो पता है. मैं घर में अलाउड नहीं था देखना. जय सिंह, बेन स्टोक्स, बचपन का प्यार, ब्रायन कॉक्स. Yeah. Imagine Vaibhav in the shower thing. Who is it? Lamb. What was the dialogue? Boar on the floor. Because you were confronting Brian Cox. Boar on the floor. Boar on the floor. But guys, I also have to say कि हमारे दो sister channels crossed like 5,000 subscribers each yesterday. सेकेंड लास्ट सफर के भी 5,000 सब्सक्राइबर हो गए. किताबी कैबिन्स के भी 5,000 सब्सक्राइबर हो गए. किताबी कैबिन्स में हम बहुत सारा बुक रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं और सेकेंड लास्ट सफर में बहुत सारे पॉडकास्ट डाल रहे हैं. बहुत कर रहे हैं. तो हम 1 लाख फैमिली तो हो गए हमारे चैनल्स. या वो तो भी क्रॉस थे. बैरी पुत्र, बोर ऑन द फ्लोर. आई वाज सो हैप्पी, Bangalore meetup में some of our followers had dragged their friends. Then I made every individual subscribe to Chalchitra Talks and Kitaabi. And I was like, amazing. आज हमारी YouTube community पे comment आया है कि my closest friend is leaving for Canada. So can you guys please do a meetup in Delhi? Yeah, we'll do that. In August. तो मेरे को लगता है सबसे पहले तो हमें मीटअप कराना है पुणे में, क्योंकि मेरे को लगता है पुणे में हमारी मतलब इतनी ज्यादा ऑडियंस है. इतनी ऑडियंस है. पता चला 3 लोग आए मीटअप. पता चला सिर्फ like Godfather group के पुणे माफिया. They call themselves a Pune mafia. Yeah. But yeah, Delhi में I was telling if we get like 15 yeses in a row, we'll do one in Delhi next month. Oh yes, दिल्ली में और पुणे में दोनों में करा लेंगे. एंड अभी जयपुर में मीटअप हो रहा है. If anyone doesn't know, there is a meetup happening in Jaipur परसों. Yes. You are coming tomorrow? No, you are coming परसों and we are doing a meetup on परसों. Yeah. Look at me working so hard. Yeah. But सवाल क्या है पर guys, we will reveal the winner of the competition. कोई भी नहीं है. ये नहीं. Disappointed. ये comments में भी आप कर सकते हैं. The phone lines are open until 12 PM कल आफ्टरनून तक. ठीक है. फिर हम विनर को वो करेंगे, रिवील करेंगे. Pune is to you like what Chandigarh is to roadies. Yeah. Nikhil is also moving to Pune. Yeah, Nikhil is moving to Pune. Yeah. Chaku Babu is saying, are you guys coming to Bangalore anytime soon? Guys, 5 दिन पहले Bangalore में meetup हुआ है. 5 दिन. Like, do you have a photo somewhere that we can show to people? ऐसे Insta का आप खुद का चलचित्र का Insta खोल के दिखा सकते हो. Yeah. स्क्रीन शेयर में जो डर लगता है वानी को. Oh God. अरे हमने सुपर चैट मिस कर दी. अजय नाइस मोटिवेशन बोल रहे हैं. अजय थैंक यू सो मच. अजय भाई भी हमारा कंटेंट बहुत टाइम से देख रहे हैं. एंड wait. Okay, I'm going to share my screen now. जूम करके पहले से ही वो फोटो खोल के रखो जिससे हमें आपकी कोई Thank you. Okay, that's it. Yeah, this is the meetup which happened in Bangalore, guys. And zoom कर सकते हैं. And this is me. Wow. ये होता है guys जब आप ईगो आपकी बड़ी हो जाती है. सबसे पहले आप बोलते थे. Yeah. This is Dushyant, this is Anuj, this is Pavan. अब आपको सबके नाम बताने पड़ेंगे, आपको पता है ना. वैसे आप सारे गॉडफादर्स के तो बता ही दोगे. Yeah. Manish. No, this is Ashwin. I can't remember his name. वानी ऐसे मत कर, बुरा लगता है लोगों को ऐसे. I am sorry. He's the only. I was confused for 2 names, and I asked them again when I was leaving, and because they were slightly different, like 2 Hindi words combined, and I couldn't remember even after that. So I'm going to stop naming people now.
मैं वानी के पीछे हूँ. मनीष just commented yes. I mean मनीष ने तुम्हारे साथ ट्विटर पे भी फोटो डाली थी ना, because he Manish attended was the sorry. Manish was also in Delhi meetup, and then everyone made a joke. But अभी लंदन में भी होता है. He's like, हाँ वो out of budget था. Sorry, बाहर नहीं करता. Very cool dude. Yeah. Now But Manish this is is, going to come to Jaipur also. This is what he yeah. promised. Seriously? We made a joke about it, but I hope he. Yeah, My he likes battery just died. Like no. Yeah, I'll be back in a sec. nice. Is there any age restriction in the meetup? No, not at all. Yeah, I was trying to think of something clever to say, but I could not. But we're going to be in Jaipur Saturday, so do come. Delhi wala people, if you're here. I realized that doing it in parks and open areas is much more convenient because you don't have to arrange for, you don't have to look after bookings, you don't have to really care about a lot of things. So Yeah. we'll Thanks to me for that idea, no? yeah. क्योंकि जयपुर वाला भी हम by the way पार्क में ही Gardens. करेंगे. There is a park where like I want to do the Jaipur meetup. Like yeah. Oh, it's raining by the way, so we can do it. So like I'm assuming the Mosam will be nice. Yeah. Delhi में will be Lodi Gardens. Oh yes, हाँ दिल्ली में लोधी गार्डन्स में करना चाहिए था हमारा लास्ट वाला भी. ओ तब दिमाग नहीं चला था हमारा. हाँ. Sorry. Yeah, but like this is great, guys. Now we'll wrap the conversation and do यार check out Saga. इतने शानदार like वो लोग क्या इंडिया में काम कर रहे हैं and books से related उन्होंने इतनी अच्छी ऐप बनाई है. They are like core book lovers. Please go and see. हमने link in description डाला है. Do and see the Hindol का merchandise. Hindol के कोट का merchandise. What doesn't kill you gives you content. Do watch Moneyball. Sorry. नहीं और क्या है, और क्या call to action देना है? I'm just thinking. Subscribe to Kitaabi Cabin. Subscribe to second last up Kitaabi Cabins. Become a patron. Follow You us see- on Instagram. We're about to hit 30,000 followers. Yeah. बहुत कुछ है यार, guys. Call to action. Start watching us everywhere. Yeah, and guys, do let us know if you want the T-shirt of क्या था भैया आप हैं कौन? नहीं. भाई साहब कौन है आप? भाई साहब कौन हैं आप? I don't think it's a little demeaning. I don't think it fits the Chalchitra. नहीं, बट इसमें तुम आर्ट वगैरह कुछ लगा दोगी तो ये वर्क कर जाएगा. मतलब लाइक ऐसे तुम ऐसे खड़े, भाई साहब कौन है आप, मतलब तुम्हारा सिल्हूट हो, बेसिकली वर्क कर जाएगा. Hey guys, whosoever wants a photograph with my photo on their t-shirt, please let me know. बट आप दिखोगे नहीं उसमें बेसिकली. My silhouette on the t-shirt. But yeah, this is nice. This is great, guys. We will now end the conversation. Anything you want to add apart from the call to actions? How do you get a house fly out of your window? Nice one. And if you are a motivational speaker who is watching this, at the end of the day यार सबके पास motivation होती है, सबकी influence है. आज के डेट में अगर आपके 10 से ज्यादा follower हैं, एक से ज्यादा follower है life में, तो people like kind of follow you. तो obviously like there are slip ups जो मेरे end पे भी होते हैं, सबके end पे होते हैं, but just kind of be interested in things, be fan of things, be unapologetically Let people be a fan of things. Yeah, I think The whole idea of putting people down really turns people off. Yeah. Because people love what they do for a reason, and by just negating their experiences, you're negating their individuality, and you're just making an army of people who do not know how to think except look up to you for advice, which 9 out of 10 times doesn't work for them because they're not you. Yeah. And if you're still lurking here, email us and we'll have you on the channel and we can have a discussion. Right. And to the moon पूछ रहे हैं कि टी शर्ट गिव अवे तो किया ही नहीं. मैंने जैसा कि बोला कल 12 बजे तक आप कमेंट कर सकते हैं. Whom did Vaibhav have a confrontation with in Shar? The funniest answer wins. B. The initial is B. So motivational thought, it's not a house fly, it's home fly. It's a house fly. Yeah. मेरे स्कूल में यही पढ़ाते हैं, sorry. Yeah. But I'm going to skip down. I'm not listening. I'm going to listen to it.
I am Yeah. open to the thought of renaming it as Home 5, but I disagree. Okay, sorry. I've said We'll everything end that I it. We'll could. end it now. This was great, guys. Thank you so much They for were not letting joining. me speak. Okay, Chalo. Thank you so much for joining. And let's wrap this. Bye bye. bye. वो क्या क्या है वैसे कर अच्छा हमें ही एंड करना है क्या